everyone, a very good afternoon to all of you present over here. मैं हूँ आपकी मेंटोर फॉर CUET साइकोलॉजी और मेरा नाम है मृदुला। जैसे कि आप सबको पता है हमारा गेस्ट पेपर, आई थिंक ये हमारा गेस्ट पेपर 3 होगा, राइट? तो अभी तक हमने 1, 2 और ये थर्ड हमारा पेपर है। ओके। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं और आपको ये भी पता है कि इसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमारे कुछ ऑलमोस्ट अभी तक हमारे, अगर मैं बोलूं तो 200 क्वेश्चंस कुछ हो चुके हैं जो कि हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है। अब दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ठीक है। जो कि आई रियली वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से देखिएगा, राइट? गुड आफ्टरनून नमन। तो yes, I think without further ado, we all should let us all get into the video. तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो कि सामने आपके है वो ये है। यस, साइकोलॉजिकल असेसमेंट involves measuring and evaluating psychological attributes of an individuals, often using multiple methods. मतलब जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है उसमें मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आता है। मतलब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आता है, जैसे हम उसको वेरियस मेथड्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो इसका रीजन ये लोग ये दे रहे हैं कि psychological attributes like happiness and dominance can be accurately and consistently measured using informal assessment methods. अब देखो, एक बार और assertion देखें हम। ठीक है, अगर आप लोग बोलें तो एक बार और assertion देखते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ऑफ कोर्स, बिल्कुल मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं हम सबको। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? मल्टीपल मेथड से हम इवैल्यूएट करते हैं बेसिकली। रीजन इसका ये बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे हैप्पीनेस है, डोमिनेंस है, ये सारा हम इनफॉर्मल असेसमेंट मेथड के थ्रू मेजर कर सकते हैं। बट इनफॉर्मल मेथड्स तो हम कर ही नहीं सकते इसमें। हमें एक फॉर्मल वे में जाना, वेरी गुड नमन, वेरी गुड, हमें एक फॉर्मल वे में जाना पड़ता है इस चीज के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A is true but R is false, that is ऑप्शन नंबर C। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड एल्फ्रेड बिने, ओके, एल्फ्रेड बिने's unifactor or one factor theory of intelligence emphasize in its conceptualization of intelligence? एल्फ्रेड बिने की जो थियोरी थी, दैट इज यूनिफैक्टर थियोरी और वन फैक्टर थियोरी, उस पर्टिकुलर थियोरी में बेसिकली क्या एम्फोसाइज किया था कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस पे? तो इसमें सबसे पहले लिखा है सिंगल सेट ऑफ डाइवर्स एबिलिटीज, मल्टीपल इंडाइसेस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, अ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, या कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग द इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो क्या है मतलब? इज इट अ सिंगल सेट ऑफ डाइवर्स एबिलिटीज? इट्स ओके महिमा, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई मस्ट से गुड आफ्टरनून। यस, एल्फ्रेड बिने की यूनिफैक्टर थ्योरी में क्या एम्फसाइज किया था उनने? क्या वो मल्टीपल इंडेक्सेस थे? ठीक है। या वो सिंगल सेट था या क्या था? सेट नहीं था वो। सबसे नहीं बच्चे, सेट देखो, इसमें सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, सिंगल सेट ऑफ डाइवर्स एबिलिटीज था या सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज था? डाइवर्स तो है ही नहीं सिंगल सेट में इसमें। ओके, सिंगल सेट मतलब क्या होता है? इट इज द सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। मतलब कॉग्निटिव मतलब अगेन रिक्वायरिंग, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल, आई डोंट नो इफ आई गिवन यू एवर दिस एग्जांपल, कि अगर 5 लोग खड़े हैं, लेट्स से एक बंदा शेफ है, एक बंदा आर्टिस्ट है, एक बंदा पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, दूसरा सिंगर, तो उसमें से किसे, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिने, किसे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा? ऑफ कोर्स उसे ही माना जाएगा जिसके हाथ में बुक्स और जो पढ़ाई कर रहा है, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर है अ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। ओके, स्टेटमेंट्स आए अब सारे। ठीक है, लेट अस सी। थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज मल्टीफेसेटेड, comprising seven distinct yet relatively independent abilities. तो ओके, ये यहाँ पे ये बोला है। ओके,
Okay, we should. Okay, nahi, Mahima, it's completely all right. I'm there with you till the time you give your CUET exam. Okay, don't worry. So yes. Okay, statement one बताइए statement one सही है या नहीं? By the time I'll read the second statement. Statement two, Guilford's structure of intellect model implies that intellectual traits can be exhaustively categorized into 180 distinct cells, each representing a unique combination of operations, contents, and products. तो भाई मुझे तो ठीक लग रहा है ये स्टेटमेंट टू. लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक. स्टेटमेंट थ्री है क्या इधर? ओके, स्टेटमेंट थ्री नहीं है, तो लेट अस सी इज स्टेटमेंट वन एंड टू करेक्ट और नॉट. क्या स्टेटमेंट वन सही है? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में मल्टीफेसेटेड है, इट comprises of these many abilities, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और आपका स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, और इसका करेक्ट आंसर है ए. वेरी गुड महिमा, that both the statement 1 and the statement 2 are correct. ठीक है? Now, arrange the following psychological attributes based on their direct visibility in outward behavior from the most visible to the least visible. Okay? So, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वी नीड टू अरेंज इट. ठीक है, कि सबसे ज्यादा विजिबल क्या होता है आउटवर्ड बिहेवियर में, हमारे सबसे ज्यादा विजिबल क्या होता है? ठीक है, कैन वी डू दिस? आउटवर्ड बिहेवियर. ओके, तो हमारे आउटवर्ड बिहेवियर में सबसे ज्यादा से सबसे कम. ओके, फ्रॉम द मोस्ट विजिबल टू द लीस्ट विजिबल पे आना है हमको. ओके. ओके, देखो, बहुत से लोग इसके बहुत से आंसर्स दे सकते हैं. क्यों? आई टेल यू, बिकॉज सब नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन आवर ओन परसेप्शन. ठीक है, कोई बोलेगा कि क्या मतलब, मेरे लिए इंटरेस्ट पहले आता है, कोई बोलेगा मेरे लिए पर्सनालिटी पहले आती है, कोई बोलेगा ये पहले आता है, कोई बोलेगा वो पहले आता है. सो व्हाट डज इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताओ? व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? According to me, the correct answer is A. Okay, that is personality, interest, aptitude and values. Okay, so मेरे हिसाब से तो A है, आपके हिसाब से? Okay, I believe two of you are also answering the same over here, Naman and Mahima. Very good. So, but यहाँ इसके एक से ज्यादा मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे जो मोस्ट पॉसिबल लग रहा है वो A लग रहा है. ठीक है, लेट्स मूव. Okay, here's the match the following. Okay, तो चलो, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किस में होती है? तो मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे बनाती हूँ A2, लॉजिकल मैथमेटिकल दैट इज B. ओके, B इज 3, स्पेशल इज मतलब C मतलब 4, और D मतलब 1. ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, पहले अपन ये देख लेते हैं. A2, B3, C4, D1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड गाइज, एब्सोल्युटली राइट. सी, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6. Which psychological assessment method is particularly noted for its in-depth and comprehensive approach but may suffer from the subjective interpretations of the assessor? ओके, अब यहाँ पे देखो, आपके क्वेश्चन में एक चीज है बहुत बड़ी इधर. ठीक है, आपके क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर चीज का आंसर छुपा हुआ है. छुपा मतलब एज इन यहाँ पे इन डेप्थ की बात हो रही है ना. ओके, इन डेप्थ एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. तो डेफिनेटली एक इन डेप्थ मेथड तो केस स्टडी होता है ना. द करेक्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू मार्क इज केस स्टडी. ओके, moving on. Alfred Binet, one of the early intelligence theorists, defined intelligence as the ability to dash, understand well, and reason well. This is very easy. This is the definition. तो वो जो definition आपकी दी हुई है, ठीक है, वो उसमें यही आता है. Intelligence as the ability to judge well, understand well, and reason well. तो यहाँ पे आएगा judge well. Now,
According to Robert Sternberg's triarchic theory of intelligence, which type of intelligence is primarily involved in the ability to generate the novel solutions? Generating the novel solutions. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी जिसमें तीन इंटेलिजेंसेस आती हैं कॉम्पोनेंशियल जिसको एनालिटिकल बोलते हैं एक्सपीरियंशियल जिसको क्रिएटिव भी बोलते हैं और कॉन्टेक्सुअल जिसको स्ट्रीट स्मार्टनेस भी बोलते हैं तो कौन किस में आप दे कैन जनरेट नॉवल सॉल्यूशन तो जनरेटिंग नॉवल सॉल्यूशंस इज ऑलवेज क्रिएटिव इंटेलिजेंस दैट इज द एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस यस एब्सोल्युटली राइट एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव ठीक है मूविंग ऑन in the planning, attention, arousal, and simultaneous successive model of intelligence, which process is responsible for integrating information into the knowledge system by perceiving the relations among various concepts and integrating them into a meaningful pattern for comprehension? What could be the answer for this? Can you tell me? इसका क्या आंसर हो सकता है बताओ What could be the answer for this? Come on. पास्ट मॉडल में कहाँ पे ये चीज होती है जहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं चीजों को इन अ वेरी वेरी मीनिंगफुल पैटर्न अराउजल अटेंशन साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग या सक्सेसिव प्रोसेसिंग So it is the successive processing. Okay? It is the successive processing. Very good, beta. Very good. Now, which concept refers to the characteristic and relatively stable patterns of behavior that are reflected in the diverse ways individuals react and interact in different situations? Relatively stable, okay, patterns of behavior that are reflected in the diverse ways individuals react and interact in different situations. I believe this is pretty easy to understand. The correct answer is personality. ठीक है? Personality. Yes, absolutely right. Okay. Concept of self के regarding है. Personal self primarily focuses on attributes that relate to one's individual achievements, freedom, and comfort. Statement 2, the social self is primarily concerned with one's own needs and less with family and social relationship. तो भाई ऑप्शन 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है ये तो नहीं है ठीक है The biological self is an early form of self-awareness exemplified by a newborn's cry for milk. Okay. The social self emerges from a child's psychological and social needs and values, cooperation, unity, and family relationships. What could be the correct answer? Anyone? मेरे हिसाब से 1, 3 and 4. Okay? 1, 3 and 4. That is option B. Absolutely right. Very good. Now, in the dash culture, the self is often not distinguished from the group, leading to a state of harmonious coexistence, while in dash culture, the self and the group are seen as separate identities, clearly defined boundaries. So, the पहला है Western, दूसरा है सॉरी पहला है इंडियन दूसरा है वेस्टर्न सो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इन द इंडियन कल्चर ओके एंड इन द वेस्टर्न कल्चर ओके यहाँ पे हम एशियन और अमेरिकन नहीं डाल सकते ठीक है यूरोप आपको लगेगा कि मैम ये एशियन अमेरिकन क्यों नहीं डाल रहे आप एशियन डाल सकते बट वो अमेरिकन आ गया एशियन या दूसरा बोलते तो ठीक है बट यहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न ही आएगा ठीक है चलो The original Latin meaning of personality is derived from the word persona, which refers to the mask used by the actors. ठीक है? चलो. Assertion. By the age of 6 to 7 years, children have formed a stable self-esteem in areas such as academic and social competence.
Self concept is a general view of oneself that is either positive or negative and is not related to specific domains like academic or social competence. What could be the answer for this? इस assertion reason का आंसर क्या है जल्दी से बताओ. What do you guys think? Yes? What could be the answer for this assertion reason? It is B. Okay? No, it is B beta B. Which of the following is not a feature of personality? Bipartite, uniqueness, transience, या adaptability. According to me, what do you think is not the feature of personality? Bipartite, uniqueness, transience, या adaptability. Who will tell this? Who will tell this answer? Very good. It's bipartite. Okay, again the match and match the following. Trait. Okay, so it's a very stable. So A is 4. ठीक है. Disposition. Okay, character and habit. Habit is the tendency to react in a particular way. तो भाई habit तो D का आ जाएगा 1. Okay. Disposition is over, okay, these are the, matlab character is the overall pattern of behavior. So just a minute. It is, it's, wait. I think C is, no, definitely not. C is 2. So D is the correct answer. Okay, D is the correct answer. In Charak Samhita, individuals are categorized into dash and dash types, representing the unique blend of humoral element based on the Tridosha system. Vat, Pitt and Kaf. Okay, तो वात पित्त एंड काफ. तो इसमें द करेक्ट हम करेंगे इसको ऑल ऑफ द अबव करेंगे. ठीक है, सिर्फ वात पित्त पित्त काफ काफ वात नहीं, वात पित्त एंड काफ तीनों होते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव. Which of the following best describes the characteristics of the mesomorphic personality type proposed by Sheldon? Endomorphic, mesomorphic, ectomorphic. Mesomorphic मतलब strong, courageous. ठीक है? B. In the appraisal of potentially negative events, harm refers to what? Harm refers to the past damage that has already been done, जो कि हो चुका है already. ठीक है? Okay. So, person's past experiences in handling stressful situations can influence their perception of current stressors. ठीक है, ये आपका assertion है. Tell me what about the assertion. एक और बार मैं read करूंगी. A person's past experiences in handling stressful situations can influence their perception of current stressors. Reason: individuals who have never encountered stress before are more likely to view new stressors as less threatening. Okay, what about this? What about the assertion and the reason? Tell me. Yes? क्या हो सकता है assertion reason का option इसमें बताइए. Okay, somebody saying A. Okay, what do you say? What is the option? See, it is all right. ठीक है, A भी सही है, B भी सही है, but मेरे हिसाब से वो explain नहीं कर पा रहा है. Okay, okay, Maima and everybody, why do you all say C? Individuals who have never encountered stress before are more likely. Of course, जिनने पहले कभी एक स्ट्रेसर को फेस नहीं किया है, स्ट्रेस को फेस नहीं किया है, उसको तो वो लेस थ्रेटनिंग लगेगा ही ना भाई. तो द करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है दैट इज बी. एक्सप्लेन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट इट्स राइट. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल स्ट्रेस? पर्सनल इंजुरी, pollution, parties, earthquake.
तो सोशल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है? ना तो पर्सनल स्ट्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे सोशल स्ट्रेस की बात हो रही है, हेंस पार्टीज। ओके, स्टेटमेंट्स वापस। फिजिकल स्ट्रेस इज ऑलवेज caused by a lack of physical activity and can never result from ओवर एक्सर्शन। तो भाई ऐसा तो नहीं, ओवर एक्सर्शन से बिल्कुल हो सकता है फिजिकल स्ट्रेस, है ना? तो ये तो वही हो गया, ठीक है। सो एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, ओके। Psychological stress is unique to each individual and can result from internal conflicts and social pressures, बिल्कुल ठीक है। Environmental stress is only related to natural disasters and does not include factors like pollution or extreme temperature. No, ये भी गलत, ये भी गलत। Social pressure such as source of psychological stress may come from people who impose excessive demands on us. तो इसका करेक्ट है सेकंड ऑन फोर, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, दैट इज सेकंड एंड फोर। सेकंड एंड फोर राइट। Challenge appraisals in the primary appraisal process are associated with what? चैलेंज अप्रेजल्स, ठीक है? क्या होते हैं प्राइमरी अप्रेजल्स में? जो चैलेंज अप्रेजल्स होते हैं, वो किस चीज से एसोसिएटेड होते हैं? कैन यू टेल मी, कैन एनीबडी टेल मी दिस, कि कहाँ से चैलेंज अप्रेजल्स आते हैं, बताओ। यस, एनीवन? ओके, हाँ। एनीवन फॉर चैलेंज अप्रेजल्स? कहाँ से आते हैं प्राइमरी अप्रेजल्स में चैलेंज अप्रेजल्स? यस। Does it come from helplessness? Does it come from confident expectations or the avoidance behavior या immediate threat? Avoidance behavior से आते हैं, is it right? चैलेंज अप्रेजल्स, ध्यान से देखो, चैलेंज अप्रेजल्स प्राइमरी अप्रेजल्स में कहाँ से आते हैं? देखो, अवॉइडेंस बिहेवियर तो नहीं है डेफिनेटली, इट्स इधर बिटवीन बी एंड डी। जल्दी से बताओ अब क्या हो सकता है? It is the immediate threat. Very good, Mahima. Very good, Naman. It's the immediate threat. Okay. Match the following again. Emotional, okay, physiological, cognitive and behavioral. ठीक है? तो भैया देखो, इमोशनल का डेफिनेटली आई थिंक मूड स्विंग से आ जाएगा, तो वन इज बी। ओके, फिजियोलॉजिकल का जो आएगा आई थिंक ए हो जाएगा, टू इज ए। ओके, थ्री दैट इज कॉग्निटिव, cognitive is poor concentration, that is three is D. Okay, and behavioral is, okay, sorry, two is, yes, two is A. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे वो आ रहा है, रुको मैं बताती हूँ आपको। वन बी, टू सी, सॉरी, टू इज सी, एब्सोल्युटली टू इज सी, थ्री इज डी and 4 is A. Absolutely right. So A is the correct answer. Very good, guys. Absolutely right. Okay. Arrange the following stress management techniques in the order they should ideally be performed according to their description. ठीक है, अब देखो again, नेहल, यू कैन ज्वाइन ऑन टेलीग्राम, यू विल गेट द पीडीएफ। ओके, बाद में आपको दिखेगा, सो आप देख लेना कैसे ज्वाइन करना है। तो यस, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, यू विल बी एबल टू गेट इट। या कैसे अरेंज करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हम, मतलब आइडियली, मतलब दे शुड, हाउ शुड दे बी आइडियली परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या परफॉर्म होना चाहिए? क्या सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक आनी चाहिए? डू यू थिंक दैट कॉग्निटिव बिहेवियरल के बाद एक्सरसाइज आनी चाहिए? ओके, और लाइक व्हाट डू यू थिंक इसका क्या आंसर होगा? यस, सबसे पहले आई बिलीव सीबीटी आना चाहिए या रिलैक्सेशन आना चाहिए, बताइए। मेरे हिसाब से द फर्स्ट कुड बी, ओके, सीबीटी। ओके, सीबीटी में
रिलैक्सेशन, और सीबीटी में आप एक्सरसाइज भी कर ले सकते हो। उसके बाद बायो फीडबैक एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, तो ऑप्शन नंबर बी। बेटा दिस इज जनरली ऑप्शन नंबर बी। नो 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 नो, यहाँ पे सीबीटी के बाद की टेक्निक्स की बात हो रही है, क्योंकि ये चीज याद रखो कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले सीबीटी, ओके, सीबीटी के अंदर ही तो ये सारी चीजें आती हैं। सीबीटी के अंदर, उसके बाद आप स्टार्ट, सीबीटी आपने बिगिन किया, आपने एक्सरसाइज करवाया, उसके बाद आपने रिलैक्स बेसिकली करवाया, एंड और या तो फिर आपने पहले बायो फीडबैक करा दिया, फिर आपने रिलैक्स करवा दिया। ओके, now there is a passage. So, although many definitions of abnormality have been used over the years, none has won universal acceptance. Still, most definitions have certain common features often called the four Ds: deviance, distress, dysfunction, and danger. That is psychological disorders are deviant, distressing, dysfunctional, and possibly dangerous. This definition is useful starting point from which we can explore psychological abnormality. Since the word abnormal literally means away from the normal, it implies deviation from some clearly defined norms or standards. In psychology, we have no ideal model or even normal model of human behavior to use as a base of comparison. Okay, so just a minute. Various approaches have been used in distinguishing between normal and abnormal behaviors. From these approaches, there emerge two basic and conflicting views. The first approach views abnormal behavior as a deviation from social norms. Many psychologists have stated that the abnormal is simply a label that is given to a behavior which is derived from social expectations. Abnormal behavior, thoughts, and emotions are those that differ markedly from a society's ideas of proper functioning. Each society has norms which are stated or unstated rules for proper conduct. Behaviors, thoughts, and emotions that break societal norms are called as abnormal. What ancient belief about the cause of abnormal behavior is still encountered in modern times? Yes, कौन सा ऐसा बिलीफ था जिसको अभी हम मॉडर्न टाइम्स में भी लाइक लेते हैं कॉज? लाइक व्हाट्स द कॉज ऑफ abnormal बिहेवियर, बताओ। एंशियंट टाइम्स में था, और अभी भी लोग उसको इनटू कंसिडरेशन ले रहे हैं, बताओ। यस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? इट इज exorcism. Which period was known as the belief that psychological disorders were caused by evil and involved numerous witch hunts? कहाँ पे हुआ था ये विच हंटिंग, और ये सारी चीजें कहाँ पे हुई थी? लाइक किस पर्टिकुलर पीरियड में दे ऑल स्टार्टेड विथ विच हंटिंग एंड यू नो evil things and everything? Where did it all happen? Was it the Middle Ages? Was it the age of reason and enlightenment? Was it the Renaissance? Was modern era? तो नहीं, but हाँ, A, B and C में से क्या है? It is the Middle Ages. Very good. What's the main purpose of classifying psychological disorders? Of course, the main function is classification. Okay, इससे better इसका थोड़ा और evolved answer होता तो अच्छा लगता है यहाँ पे, but still. According to the biological model, what basis does abnormal behavior have? It's the biochemical basis. ठीक है, abnormal behavior का biochemical basis होता है. Which model believes that abnormal behavior, whether normal or not, is determined by psychological forces within a person of which they are not consciously aware? तो कौन सा, which model believes that कि psychological forces within a person जहां से वो consciously aware नहीं है? Which model, बताओ? Anybody, can you tell me? What do you think? Yes, very good. What's the primary focus of attention in the therapeutic process? The client. The client, then comes their relationship. Okay?
Empathy in the therapeutic relationship means having compassion and pity towards the suffering of the client. Assertion is wrong. Empathy involves understanding and feeling the client's situation from their own perspective rather than just having intellectual understanding or sympathy. So A is false, but R is true. That is option number D. Psychotherapy aims at dash thinking patterns to help clients overcome their psychological issues, changing their thinking patterns. Option B. Which of the following is a goal of psychotherapy related to personal development? Increasing the income? No. Correcting the position? Of course, reinforcing the resolve. Option number A. Okay, here are the statements again. Behavior therapy attributes psychological problems primarily to intrapsychic conflicts. No. Psychodynamic therapy does that. ठीक है? Psychodynamic therapy uses methods like free association and dreams to elicit thoughts and feelings. हाँ, second वाला बिल्कुल सही है. ठीक है? Existential therapy focuses on the client finding solutions through a process of personal growth. And behavioral therapy uses emotional insight as the primary benefit to the client. Second and third. Okay, second and third. In behavior therapy, dash operations control the behavior by changing something that precedes the behavior. बताओ. Beta, it should be banned in all the countries, of course. Yes, in behavior therapy, which operations control the behavior by changing something that precedes the behavior? बताइए. क्या होते हैं वो? क्या वो एंटीसीडेंट्स होते हैं? क्या वो सब्सिक्वेंट होता है या क्या वो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं? कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो? व्हाट डू यू गाइस थिंक? इज इट एंटीसीडेंट या इज इट सब्सिक्वेंट? ऑपरेंट ऑपरेशंस तो हो ही नहीं सकते बेटा. इट इज द एंटीसीडेंट ऑपरेशंस. What's the central thesis of rational emotive therapy formulated by Albert Ellis? Albert Ellis की psychotherapy, because exorcism is of no use. Exorcism just, takes away every ounce of everything from you. Why exorcism should be there? Yes, rational emotive therapy का central thesis क्या था? Negative emotions, childhood experiences, irrational beliefs या cognitive distortions? Is it irrational beliefs? Okay, ठीक है. फिर से statements हैं. Effective strategies include if increasing opportunities for learning prejudices. नहीं, A तो बिल्कुल possible नहीं है. Encouraging close interactions between group and cooperative context can be beneficial. हाँ. Highlighting group identity rather than individual identity is key to reducing prejudice. Information and education dissemination can help in correcting stereotypes and reducing in-group bias. So, एक second, एक minute. What could be the correct answer for this? Tell me. What do you think? इसका क्या correct answer होगा? You say second and four. Second is encouraging the close interactions. Okay, and education dissemination. Okay. D. बेटा वन एंड फोर तो नहीं हो सकता. दैट्स रॉन्ग 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 एब्सोल्युटली रॉन्ग. वन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता. हम प्रेजुडिस के लिए वो थोड़ी. नो, एब्सोल्युटली नॉट. हाउ कम ए? हाउ आर यू से? ओके, ए इज राइट. या आई थॉट यू आर सेइंग डी. A is correct. What component of prejudice is often accompanied by dislike or hatred towards a particular group? So, of course, the which kind of component? बताओ. Cognitive, affective, stereotypical या behavioral? बताओ. Which component of prejudice is often accompanied by dislike or hatred towards a particular group? क्यों? किस तरह से आप टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप आप हेट्रेड कौन से कंपोनेंट से आ सकता है?
अफेक्टिव मतलब इमोशनल, ये चीज समझो. कॉग्निटिव मतलब related to a lot of thinking patterns. Behavioral matlab it is showing in your behavior. And stereotypical. So yeah, it should be stereotypical. Psychologists have found that attitudes are more likely to be consistent with behavior when the person believes the behavior will have a dash consequence. Attitudes are more likely to be consistent with behavior जब एक इंसान को लगता है कि behavior will have a positive impact or a positive consequence. Okay, assertion reason. The kernel of truth concept reduces the persistence of stereotypes and prejudices. No, बिल्कुल नहीं. People tend to hold on to stereotypes because they believe there must be some accuracy in widely held beliefs, even if only supported by a few examples. So, हाँ, ठीक है. हम बोल सकते हैं कि A and sorry A is false and R is true. However, जो आपका जो false reason वाला भी जो है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा kernel of truth जैसे लग रहा है, but still यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको डी ऑप्शन यही मार्क करेंगे. Which condition is necessary for a person's attitude to be consistently exhibited through their behavior? Person's attitude to be consistently exhibited through their behavior. एक strong attitude हो सकता है. Okay, attitudes are more likely to change when the message is delivered by a highly credible source rather than a low credible source. हाँ, statement one is right. ठीक है. Um, Messages that generate a moderate level of fear are often effective in convincing people and can lead to attitude change. हाँ, possible. Which factor is not typically involved in the formation of attitudes during the early years of life? Early years of life, media, because all of these are involved. Which of the following conditions is crucial for the formation of groups? कौन सी condition is very very crucial for the formation of groups? Proximity. Okay, एक case study है. Individual differences in human functioning underscore the rich diversity in physical and psychological attributes among humans, from traits like intelligence and creativity to behaviors and emotions. This diversity is not only natural but essential, adding vibrancy to the human existence, much like varying colors enhance the beauty of the natural world. Psychologists have long recognized and studied these differences, aiming to understand, measure, and predict individual behaviors and capabilities. Intelligence as the key psychological attribute illustrates the breadth of human variation. It encompasses the ability to reason, solve problems, understand complex ideas, and adapt to environmental changes. Theories of intelligence ranging from Spearman's notion of general intelligence factor to Gardner's theory of multiple intelligences reflect the complexity and multidimensionality of human cognitive abilities. Similarly, other psychological attributes like aptitude, interest, personality, and values contribute to the unique makeup of an individual. The assessment of these attributes through standardized tests, interviews, case studies, and other methods allow psychologists to understand individual differences deeply. These assessments not only aid in identifying personal strengths and areas for development, but also in predicting future behaviors and outcomes. Through the study of individual differences, psychology provides insight into the intricate tapestry of human nature, emphasizing the importance of diversity in enhancing the richness of human experience. What does the concept generally understood as general intelligence encompass? General intelligence, a collection of unrelated personal interests, no. Specific talents, ability to adapt, reason, and solve diverse problems, of course. That is the purpose of general intelligence. What theory suggests intelligence is made up of various distinct abilities? The idea that intelligence is a single fixed quantity, the belief in a singular emotional intelligence, concept of diverse specific intelligences, the notion of intelligence being solely hereditary, the concept of diverse specific intelligences. Okay?
In a setting where different individuals excel in various disciplines, which concept of intelligence could explain the range of their interest? Like excel in various disciplines, I believe multiple specific forms of intelligence. How does the idea of a single overarching intelligence contrast with the concept of multiple specific intelligences? One focuses on emotional skills, the other on cognitive. One suggests a single abilities. One is based on genetic factors, the other considers environmental influences. No significant difference, both suggest the presence of various abilities. देखो, how's the idea of a single overarching intelligence contrast the concept of multiple specific intelligences? ओके तो एक इमोशनल एबिलिटीज भी हो सकता है या तो एक बेस जेनेटिक फैक्टर्स पे भी हो सकता है और दूसरे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पे भी हो सकता है. Okay. The last one, which of the following methods is considered scientifically valid for assessing individual differences in psychology? Observing horoscope, absolutely not. Relying on personal anecdotes, no. Consulting astrological charts, no. Utilizing the standardized test is the correct answer. So we are done with our guest paper 3, I believe. ठीक है. So we'll be meeting sometime later. जब तक if you still have some time in your CUET exam, so you can join the crash course 2024 that we have. And thank you so much, everyone. I'll be meeting you some other time. तब तक please practice these questions and thank you for joining.